Hey, how's it going, everybody? Welcome back to another video. Hope you geeks and nuts are doing absolutely fantastic. And in today's video, I'm gonna talk about my new wall organizer. That is the IKEA SKADIS. So let's get started. Closed doors, I'm a fool for your love. ऑलराइट वी आर बैक। और पिछले काफ़ी महीनों से मैं ढूंढ रहा था अपने लिए एक वॉल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, जिसको हम कभी कभी पेग बोर्ड्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इट्स लुक रियली गुड एंड कीपिंग इन माइंड व्हाट आई डू इन द मेकर स्पेस एंड इन एवरीथिंग रिलेटिंग टू सोल्डरिंग एंड वायरिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। आई थॉट इट वुड बी रियली कूल टू हैव माई ओन वॉल ऑर्गेनाइजर। और बहुत सारे पेग बोर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में, बट सबके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि दे आर नॉट यूनिफॉर्म, दे हैव अ डिफरेंट होल्स एंड उनकी एक्सेसरीज अलग होती हैं. समटाइम्स यू कैन नॉट इवन फाइंड इट until IKEA solved this problem. So if you know, IKEA is a big Swedish furniture giant, and IKEA recently India में आई थी. So I thought कि why don't give it the IKEA try for the wall organization system, and it is well renowned around the world. A lot of people use it. A lot of people I know from the maker community use it, and उसका नाम है IKEA SKADIS. सो ये है एक IKEA का पेगबोर्ड सिस्टम जिसका नाम है IKEA SKADIS. एंड इसमें बेसिकली पेगबोर्ड इज नथिंग लाइक जस्ट अ बोर्ड विद लॉट ऑफ होल्स ऑन इट, एंड यू कैन अटैच डिफरेंट एक्सेसरीज जिसमें आप माउंट कर सकते हैं अपने टूल्स एंड कुछ भी चीज़ें जो आपको अपने वॉल पे रखनी है. सो वाई आई चोज IKEA SKADIS इज नंबर वन, दिस इज अ यूनिफॉर्म पेगबोर्ड सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि इसके होल्स जो है वो पर्टिकुलर साइज के हैं. सो लॉट ऑफ एक्सेसरीज आर अवेलेबल. यू कैन बाय डायरेक्टली एक्सेसरीज फ्रॉम IKEA. एंड मेरे पार्ट में जो बेस्ट थिंग थी दैट इज इसके बहुत सारे एक्सेसरीज यू कैन 3D प्रिंट. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जिन्होंने फ्री में इसके एक्सेसरीज के डिजाइंस अवेलेबल कर रखे हैं इंटरनेट पे. यू कैन डाउनलोड एंड प्रिंट देम, जो कि मैंने किया है. सो प्रॉब्लम ये थी IKEA के साथ कि IKEA इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली आया है एंड सिर्फ कुछ स्टेट्स में अवेलेबल है, लाइक हैदराबाद एंड मुंबई, एंड वो डिलीवर अभी ऑल अराउंड द इंडिया नहीं कर रहा है. सो हाउ आई गॉट दिस IKEA SKADIS इन Delhi. से what I did is I ordered it at one of the friends location in Hyderabad, and then my friend shipped it to me in Delhi using a different courier. So अगर आपको भी IKEA चाहिए and you are not living in an area where IKEA ships, then you can find someone who lives in Hyderabad, Mumbai, or maybe in Ahmedabad as well. IKEA is delivering there, and from there you can ask your friend to ship it to you. इसमें कुछ एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज ऑफ कोर्स लगे, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट बिकॉज आई रियली वांटेड इट. एंड होपफुली IKEA will also soon start shops in NCR and other region. So IKEA SKADIS, जैसे मैंने बताया कि it's a uniform system which has a lot of accessories. So let me show you some accessories. So this is the one which is really fascinating. It's a transparent box which you can mount on the board and put anything here. So you can see this is a sliding box and it's really fascinating. So this is one which I have ordered. Apart from that, there are some clips like this. If you want to hang a note, if you want to hang something like a postcard, which I'm gonna do, you can use this clips. इसके साथ which I ordered is one big tray. So you can see this is one big tray you can use to put things, 3D printed parts and whatnot. I'm gonna use this to put my paint bottles. Then there are some other things like hooks. So these are the basic hooks. You can put your keys or anything you want, quick accessibility. So I'm gonna show you how to organize all this and in a bit. Then there are some ropes. This is a stretchable rope if you want to put anything behind that. And one of my favorite is this one. So this is like a stand where you can put some newspapers or books and things like that. And I'm definitely going to show you how I'm managing everything using these accessories. But as I mentioned, the best part is of the uniform system is that you know the whole size, so you can make your own accessories, which people did in 3D printing community. So मैंने कुछ चीज़ें 3D print किया है. Let me show you. So this is the one really exciting accessory for a scissor holder. So as you can see, this is the one I 3D printed, and over here you can put scissors like this. So this is 3D printed, and I also 3D printed one for my filing set. So this is for my file set, and you can use this to hold your files like this. And one which every 3D designer should have is a vernier caliper, and इसका holder भी मैंने print किया है. So you can put your calipers like this. So it's really fascinating to have this wall organization system.
बिफोर शोइंग यू हाउ टू ऑर्गेनाइज इट, आई वांट टू टेल यू दैट इसको सेट करने का कोई एक वन मेथड नहीं है. You can make it as it's suitable for you, as you want it to be as good as you want. And to mount it on the wall, you just need to drill 2 holes, and साथ में इसकी accessories आती हैं. So you get 2 thumb screws along with it, so you can use that. So now let me take you to the wall and show you how I'm gonna set it up. So this is the wall जहाँ पे मैं set करने वाला हूँ अपना new pegboard system, and I mentioned that these are the 2 thumb screws that you will get to set it up. You just need to put 2 holes drills and set up this segment, and now I'm gonna set this up here like this. So the board is now set, and now it's time to set up the accessories. And जैसे मैंने बताया, कोई एक particular right way नहीं है accessory set करने का. Just put it as you want. So that was all for today's video. Hope you enjoyed and learned something new. And if you did, just leave a like down below and let me know in the comments. And I'm gonna see you in the next one.